MCS 219 most expected 20 questions with their answers. MCS 219 is its subject code is OOAD, Object Oriented Analyze and Design. So, question number 1 is what is OOAD? Explain its advantages. In this video, I am using all the shorts answer. It depends on you if you understand what is the meaning of every questions. Like you can make it long by yourself only also. So, what is OOAD? Explain its advantages. Object oriented analyze and design. OOAD is a methodology for analyzing and designing software system using objects and classes. Normally, you can understand that what is OOAD? It is an object oriented analysis and design. By its words only, you can understand that it is a method. It is used to analyze or design any software system by using objects and classes. Now we will discuss about its advantages. Its advantages are it is reusability. It has reusability. By this we can reuse it. Next is modularity. Next is maintainability. Its scalability is high. Better real world representation. It represents better things for a real world. It reduces development time. Next is explain abstraction. What is abstraction? Abstraction is the process of hiding unnecessary details and showing only essential features of all objects. Example: a car a car driver uses steering and brakes without knowing engine internals. Like abstraction is a process of hiding unnecessary details that shows only essential features of an object. It means एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं जो कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको हम छुपाना चाहते हैं और जो चीज़ ही दिखाना है अपने ऑब्जेक्ट का हमको उसी चीज़ को दिखाना है। इसके लिए हम जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और उसके एग्जाम्पल में है कार। लाइक कार का ड्राइवर क्या यूज़ करता है? स्टीयरिंग को यूज़ करता है, ब्रेक्स को यूज़ करता है, बट उसको ये नहीं पता रहता है कि कार का जो इंटरनल इंजन पार्ट्स है उसमें क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस है। वो एक इंजीनियर या फिर जो कार डेवलपर है उसको ही पता होगा, बट कार ड्राइवर को तो उतना नॉलेज नहीं रहता है, वो बस ब्रेक्स और स्टीयरिंग को यूज़ करता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है? इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट इम्प्रूव्स सिक्योरिटी एंड इट्स सिंप्लीफाइज डिज़ाइन। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? Encapsulation is the binding of data and method into a single unit called a class. Encapsulation का मतलब ये होता है कि वो ना जितना भी डेटाज है उन सबको एक जगह पे कलेक्ट करके एक सिंगल यूनिट में उसको स्टोर करता है और उस जगह पे जहाँ पे वो स्टोर करता है उस जगह को कहा जाता है क्लास। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, क्लास का एक बैंक अकाउंट है, उसका नाम एज अ क्लास रखा गया। तो उसमें दिखाया गया कि प्राइवेट बैलेंस और पब्लिक डिपॉजिट या विड्रॉवल या फिर कोई भी गेट बैलेंस का जो भी चेक वगैरह है, जो भी ऑपरेशंस है, लाइक फर्स्ट वन में है प्राइवेट बैलेंस, दैट इज एन एट्रीब्यूट, एंड पब्लिक जिसके बाद ब्रैकेट्स हो, ब्रेसेस हो, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, उसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। और जिसमें कोई भी ब्रेसेस ना हो उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कॉमनली हम ऐसे इसको सीख सकते हैं। और इसका जो एडवांटेजेस है, ये डेटा हाइडिंग, बेटर सिक्योरिटी और इम्प्रूवमेंट मेंटेनेबिलिटी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इनहेरिटेंस एंड इट्स एडवांटेजेस। Inheritance allows a class to acquire properties and methods of another class. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। नॉर्मली पेरेंट्स के थ्रू जो बच्चों को कुछ गुण वगैरह मिलता है
उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल व्हीकल के थ्रू हमने पहले भी देखा था कि लाइक व्हीकल उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें उसके अंदर कंसिडर व्हीकल के अंदर ही सारे कंसिडर्स होते हैं, जैसे कि कार, बाइक, ट्रक एंड इलेक्ट्रिक कार। और इसके जो एडवांटेजेस है, ये कोड रीयूज, इजी मेंटेनेंस, एक्सटेंसिबिलिटी, reduce redundancy. Next is, what is polymorphism? Polymorphism means many forms. A single interface can perform different tasks. Polymorphism का मतलब होता है एक सिंगल चीज का बहुत अलग अलग रूप, और एक सिंगल इंटरफेस का भी यूज करके हम अलग अलग डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड नेक्स्ट इज मेथड ओवरराइडिंग, एंड इट्स एडवांटेज इज इट इज flexible and we can reuse it. So next question is, what is UML? Explain its advantages. UML, Unified Modeling Language, is a standard language used to visualize, specify, and document software system. Its advantages are standard notation, better communication, easy documentation, error detection, support, object oriented analyze and design. Next is, what is a class diagram? A class diagram represent classes, attributes, methods, relationships in a system. क्लास डायग्राम क्या होता है? क्लास डायग्राम वो होता है जो डिफरेंट क्लासेस को, उसके एट्रीब्यूट्स को, जो मेथड्स हैं और उन सब के बीच में जो भी रिलेशन बन रहा उन सबको एक प्रॉपर सिस्टम में शो करे, उसको कहते हैं हम क्लास डायग्राम। और इसके कंपोनेंट्स है, इट्स कंपोनेंट्स आर class name, attributes, methods, relationships. So in that diagram we can see minus, minus 1, minus 2, and plus 1 and plus 2. The one which is upper, which does not has any braces, that is attributes, and next which has braces, that are operations or methods. Next are its importance. It shows static structure of system and helps database design. Next is, what is an object diagram? An object diagram shows a snapshot of objects at a particular moment. ऑब्जेक्ट डायग्राम वो होता है जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसका एक स्नैपशॉट हो, मतलब उसको समझने के लिए एक छोटा सा व्यू हो, रिव्यू हो, जिसके थ्रू हम उसको समझ पाए। उसके फीचर है, रिप्रेजेंट्स रन टाइम इंस्टेंस derived from class diagrams, shows object values. For example, there is student 1 and student 2. तो अगर हमको स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का नाम जानना होगा तो हम उसमें उसका रोल नंबर एंड नेम के थ्रू उसका पता कर सकते हैं, और उसी जो छोटे से इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं snapshot of an object diagram. Next is, explain association and its type. Association represent a relationship between classes. Association वो होता है जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। इसके टाइप्स होते हैं 1 to 1। ये जो रिलेशनशिप है वो एक के साथ हो सकता है, लाइक एक और एक दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, या एक बहुतों से जुड़ा हुआ है, या फिर बहुत एक से जुड़े हुए हैं, या फिर बहुत बहुत से जुड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जो है वो किस चीज से जुड़े हुए हैं? कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो यह किस चीज में आएगा? ये एसोसिएशन में आएगा। नेक्स्ट इज, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रेशन एंड कॉम्पोजिशन। एग्रेशन और कॉम्पोजिशन को हम, इसके कुछ बेसिक फीचर्स है, इसके थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ओनरशिप। एग्रीगेशन का जो ओनरशिप है वो वीक है, बट कॉम्पोजिशन का जो है वो स्ट्रांग है। एग्रीगेशन का डिपेंडेंसी, it exists, the part can exist independently, but in composition parts depends on whole. Its relationships are has a, but composition's relationship are part of. Example, aggregation department professor
but composition department could be house or room. By this small diagram, we can understand what is the difference of aggregation and composition. So the next question is, what is generalization and specialization? Like in common world we can understand कि general मतलब commonly अगर हम बोलेंगे तो general मतलब ऐसा लोग जो हर कोई है common, but special मतलब it is a proper, we are talking about a special one. So now we will understand in object oriented analyzed design what is the meaning of generalization and what is the meaning of specialization. So generalization means combining subclasses into a superclass. Means जो small अलग अलग classes है, like for example inheritance का जो example था हमारे पास कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हमें कुछ उनके गुण अपगुण वगैरह मिलते हैं, तो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो इसमें सब क्लास दिया गया है, और जो पेरेंट है वो सुपर क्लास है। तो इसमें भी व्हीकल का ही एग्जाम्पल है, तो जो कार बस ट्रक बाइक एंड ऑल है वो सब क्लासेस है, एंड जो हमारा व्हीकल है वो क्या है, वो एक सुपर क्लास है। तो जनरलाइजेशन का मतलब यही होता है। So next is creating subclasses from a superclass. एक सुपर क्लास में से उसके डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, डिफरेंट लाइक वन टू मैनी वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उसका मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट इज एंड स्पेशलाइजेशन ऑल्सो मीन्स इनहेरिटेंस। व्हाट इज द यूज ऑफ केस डायग्राम? केस डायग्राम का क्या यूज होता है? Use case diagram shows interaction between actors and a system. Its components are actor, use case, system boundary relationships. Its benefits are requirement gathering, easy communication. And by this diagram, you can understand it is an online examination system. There is a student, and the other side there is a admin. What will the admin have to take care of the login and how he would conduct the exam, and the student have to uh, like uh, look around of how he will log in or how he will take exam, and he is the only one that he will wait for his result, and he'll view that result. So by using all these methods, we use case diagram. Next is explain include and extend relationship. What is include and extend relationship? Include, it is mandatory functionality. Example, login is included in online exam. जो कोई भी ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें लॉगिन मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज एक्सटेंड, इट इज एन ऑप्शनल फंक्शनैलिटी। इंक्लूड जो है वो मैंडेटरी है, इट इज कंपल्सरी, यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू यूज दैट, बट एक्सटेंड इज ऑप्शनल, इट इज अपॉन you, whenever we sit on any online exams, like recently there was an RRB's exam, so that exam was on computer based exam, that was CBT exam. So there all the student have to log in into their account by doing by giving their registration ID and password, and after because when they log in into their account, then only they can like take conduct that take that exam. And after that there was last option of giving reviews, like how was your experience, how was the teachers and how was the staff. So if you, that is not like mandatory, that is optional. वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको रिव्यू देना है तो आप वो यूज करोगे, अगर नहीं देना है तो दैट इज नॉट नेसेसरी। सो दैट इज इससे आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज इंक्लूड एंड व्हाट इज एक्सटेंड रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सीक्वेंस डायग्राम।
सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जो एक सेपरेट सीक्वेंस में चले, जिसका फ्लो चलता रहे, एक सीक्वेंस लगातार चले. But according to this answer, let us understand कि what is sequence diagram. A sequence diagram shows interaction between object in time order. Sequence diagram वो होता है जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बीच में रिलेशन शो करता है, इंटरेक्शन शो करता है. इसका components, it has objects, lifelines, messages, activations. It uses dynamic modeling, workflow representation. Example, यूजर यूजर को जो अपना कंप्यूटर यूज करना, सिस्टम यूज करना रहता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है. जब वो रिक्वेस्ट भेजता है तो सिस्टम फिर डेटाबेस के पास जाके उसको वैलिडेट करता है, एंड आफ्टर दैट सिस्टम यूजर को रिस्पॉन्स देता है, जिससे उसके पास रिस्पॉन्स वापस जाता है. दैट इज जो यूजर सिस्टम से कनेक्ट किया, फिर सिस्टम डेटाबेस से किया, देन डेटाबेस अगेन सिस्टम से किया, फिर सिस्टम यूजर से किया. दैट इज द सीक्वेंस, and it shows like how they all are connected with each other and how connectively they work with each other. So by यहाँ पे जो लास्ट छोटा सा डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हो कि what is a sequence diagram. Next is what is a collaboration diagram. A collaboration diagram shows interaction among objects through links. कोलैबोरेशन डायग्राम जो होता है वो हमारा जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के बीच में रिलेशन बताता है. इट्स फीचर्स, इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स. ये ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पे फोकस करता है, एंड इट शोज मैसेज फ्लोज. यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी. इसके थ्रू बताया गया कि ऑब्जेक्ट ए के थ्रू जो हमें हमारा ऑपरेशन सेंड हुआ है मैसेज से, एंड फिर वो ऑब्जेक्ट सी से ऑब्जेक्ट ए के थ्रू जो पास ऑन हुआ है, ये जो इंटरेक्शन इनके बीच में हो रहा है, ये जो कोलैबोरेशन है, हाउ दे वर्क by discussing all those topics, by collaborating with each other, that only shows as a collaboration diagram. Next is what is a DFD. Explain DFD symbols. DFD, commonly DFD, the full form of DFD is data flow diagram, or its symbols are same as, like we can relate its symbols by flow chart. It represent movement of data within a system. DFD के यूज से हम हमारा जो डेटा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. And its symbols, like first is rectangle, its external entity, and its description is its source or destination of data. Next is process. The process is shown by circle. It transforms input data into output data. Next is data flow. It is a sign of an arrow. It is used for movement of data. Next is up to parallel line. Its name is data store. It is responsible for where the data could be stored, and its advantages are it is easy to analyze and it is used for better understanding. Next is explain level 0 and level 1 DFD. What is the meaning of level 0 and level 1 DFD? Now we will discuss about level 0 DFD. Level 0 DFD shows the entire system as one process. It shows that the all system only has one process. For example, we can see like the external entity. It shows
The external entity and the data flow diagram is the system shows it is a zero, and next the output is also entity. Next is level 1 DFT. It shows external entity and the process that first it will go for 1.0, then 2.0, then 3.0, and last the answer will be entity. Next is its purpose. It provides detailed system analysis. By using DFT, we can understand and we can like see the whole detail of our program, our software, and it will be easy to understand. Next is what is a design documentation. Design documentation records all design discussion and system architecture. डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन हमारा जो भी सिस्टम का सिस्टम के थ्रू हम जो भी हमारे सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखने के लिए यूज़ होता है. दैट इज़ ओनली कॉल्ड द डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड इट कंटेंट्स आर आर्किटेक्चर, डेटाबेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, UML diagrams and testing plan. And its feature are it's clear, it's accurate, and it's maintainable. Like accurate का मतलब होता है it is done on time and it follows everything on time. Next is explain cohesion and coupling. What is cohesion? A degree to which elements within a module are related, and its high cohesion is desirable. Next is coupling, a degree of dependency between modules. Low coupling undesirable. Good design, high cohesion plus low coupling. If we want to create a good, a better, best design, we have to use high cohesion but low coupling, because cohesion is a degree to which elements within module are related. Like if we want to relate all the module with each other, we have to use high cohesion. But we want to depend on depend between all the module, so that's why we use low coupling. Types of coupling: data coupling, stamp coupling, control coupling, external coupling, common coupling, and content coupling. Next is explain concurrency control and serialization. What is concurrency control? Concurrency control manages simultaneous access to shared data, and its techniques are it is used for locking, times stamp ordering, two-phase locking, 2LP, 2PL, sorry. Next is serialization. It converts objects into a format or for storage or transmission, and its applications are object persistence, data transfer, distributed systems. Last minute short topics. OOAD and advantages, UML and UML diagrams. Like at the last minute, we can understand what we have studied here. We had studied about object oriented analyze and its design, UML and its diagrams, association and its types, aggregation versus composition, generalization versus specialization, use case diagram, what is class diagram, what is sequence diagram, DFD and symbols, level O and level 1 DFD, state diagram, activity diagram, dynamic model, design documentation, cohesion and coupling, mapping classes to database tables, object identifier, integrity constraints, concurrency control, and serialization. These are all 20 topic by which we have studied about here.